Okay, guys. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good evening. Hello, sir. हाँ, गुड। सो कल आप लोगों को कुछ समझ में आया थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्ड सर कोई भी सिस्टम पे वी मस्ट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नहीं होगा तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा। सर हम कोड लिख रहे हैं, बिल्ड जाता किधर है, कब जाता है, टेस्टिंग क्या होता है, डिफेक्ट कैसे भेजते हैं। दिस विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव। और एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, इसको पूछते हैं एजाइल मॉडल। इस चीज को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। सर ओनली डेवलपमेंट प्रोसेस वी आर गोइंग टू फोकस, उसको बोलते हैं डेवऑप्स। लेकिन सर पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को प्रोसेस करने के लिए वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एजाइल। तो दैट मीन्स पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लाइफ साइकिल जो प्रोसेस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस रहता है। जैसे कि आपने डेवॉप्स पढ़ लिया, दैट इज डेवलपमेंट ऑपरेशंस, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। एटलीस्ट 3-4 मॉडल है। वाटरफॉल, सर एजाइल, agile is a masterpiece, but these are the real world scenario. Waterfall, agile, B model, these are the very important model basically they are we are going to follow. सर ये मॉडल क्या होता है एक्चुअली? प्रोसेस गाइस। आई मीन तुमने जो मॉडल पे कोड लिखते हो, बोलेंगे तुमने व्हिच प्रोसेस यू आर यूजिंग। एसडीएलसी प्रोसेस उसको बोलते हैं। इज अ सिंपल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। इफ यू डू नॉट नो प्रोसेस, आप क्या लिख रहे हो फिर? यानी सर आप बोल रहे हो कोई भी चीज उसका अप्रोच अगर सही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट अलग निकले, गलत होगा। तो ये मॉडल किस बेसिस में डिपेंड होता है? इज प्योरली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको कोई तय नहीं करता है। प्रोजेक्ट का नेचर के हिसाब से उसका क्रिटिकलिटी, उसका फंक्शनलिटी डिपेंडेंसी, ये चीज कंसीडर होकर मॉडल तय होता है। डेवऑप्स इज मोस्ट रिज्यूम पे रहेगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑपरेशंस। आपने सीख लिया। सर यहाँ पर प्रोसेस एजाइल रहेगा, वाटरफॉल रहेगा, बिकॉज दीज आर द कंपल्सरी थिंग्स। सर ये प्रोसेस जानने से पहले वी मस्ट नो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो प्रोग्राम होता है सर किस तरीका से करते हैं? ओके, फर्स्ट वी नीड टू रिक्वायरमेंट आता है हमारे पास। उस रिक्वायरमेंट को आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, उसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सर ये क्या होता है? दैट इज रिक्वायरमेंट विल बी हियर। पूछेंगे तुम कोड कहाँ से लिखते हो? सर बेसलाइन डॉक्यूमेंट इज एसआरएस, उसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके बाद डिजाइन स्टार्ट होता है, डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस, सपोर्ट। So these are the 5 basically phases you have to come across. Sir, design basically classified into 2 types. One is high level design, another is low level design. आपने ये पढ़े। उसके बाद you are going to involve in coding. Sir, what is coding? This is a coding programming part you are going to do. Coding के बाद your code will be verified. That is nothing but testing. These are the phases of your software development life cycle. तो इस चीज को अच्छी तरह समझो कि सर हमारा इन्वॉल्वमेंट इस पे कहाँ कहाँ है और हम किस तरीका से काम करेंगे। दिस इज बीआरएस, दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट। यही डॉक्यूमेंट को जो टेस्टिंग के पास जाएगा वही चीज आपके पास भी जाता है। दैट मीन्स सर दिस इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, याद रखो। इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कोड कहाँ से लिख रहे हो, इसको रिफर करके कोड लिख रहे हो, तो दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं सर, उसके बाद डिजाइन होगा। आपका इन्वॉल्वमेंट लो लेवल डिजाइन पे, आप हाई लेवल डिजाइन पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, बोलना भी मत। उसके बाद कोडिंग, योर इन्वॉल्वमेंट इज देयर, यस। आफ्टर दैट सर these are the area you are going to involve testing, and after that maintenance, that is support. These are software development life cycle. इसी बेसिस पे यहाँ पर इस मॉडल को हमने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में इंप्लीमेंट करेंगे और ये अप्रोच को प्रोसेस बोलते हैं। ओके, बिफोर वी मूव अहेड वी मस्ट नो, इंट्रो में कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में डिलीवरी कब होता है, यानी हाउ यू डिलीवर द प्रोजेक्ट।
याद रखो उसको रिलीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलीज। सर 1 रिलीज इज इक्वल टू 3 मंथ। सर यानी 3 मंथ में डिलीवरी होता है, उसको क्वार्टरली बोलते हैं, क्वार्टरली डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स। ओके, दिस इज नथिंग बट क्वार्टरली। लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर रूबी मॉडल or waterfall. Here, one discrepancy is there. If it is agile, the 1 release is equal to 1 month. ये बात अच्छी तरह याद रखो, इसलिए गाइस ये फेमस मॉडल agile. So what is agile, sir? This is nothing but your agile model. मतलब सर 1 महीने में डिलीवरी, yes, 1 month डिलीवरी होता है। तो इसीलिए गाइस फर्स्ट प्रोसेस, सर ये कितना दिन है? 3 महीने। How the requirement basically will start? How you are going to follow this process? देखो गाइस रिक्वायरमेंट ऐसे होता है, एज्यूम करो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 इज द रिक्वायरमेंट। सर ये हो गया आपका बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सर उसके बाद होगा सर एनालिसिस, दैट इज योर एसआरएस। सर उसके बाद होगा कोडिंग, योर पार्ट इज कोडिंग। सर कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग फास्ट, टेस्टिंग 2, कोडिंग। कोडिंग के बाद कोडिंग के बाद सर दिस इज योर टेस्टिंग। गेट माय पॉइंट गाइस? हेलो सर, ये कोडिंग हो गया, अभी टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2। ये टाइम सर 3 महीने में होना चाहिए, यस। सो दिस इज, यानी सर दिस इज प्रोडक्शन। ये कब जाएगा आपको प्रोडक्शन को? मार्च 31। एज्यूम करो दीज आर द वेरियस पेजेस यू हैव टू कम अक्रॉस। कैसे भी हो डिलीवरी होता है, लेकिन सर रिक्वायरमेंट बिजनेस में ऐसे रहता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हुआ। प्रोजेक्ट एक बार आने के बाद अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट, बहुत सारे क्या होता है रियल वर्ल्ड पे, उन्होंने रिक्वायरमेंट सब कुछ दे नहीं पाता है। सो इन दैट केस सर अगर एक दिन लेट हो गया तो क्या होता है? तो क्लाइंट आपको बोला गया दिस इज कंप्लीट बिजनेस, इट इज क्लाइंट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच में कुछ रूल्स रहता है। वो रूल्स ये है कि अगर मार्च 31 से एक दिन भी लेट हुआ, यू हैव टू पे अस द पेनल्टी। इन्होंने भी वही बोल रहे, वो बोल रहे हैं अगर एक बार हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गया, एज्यूम कस्टमर बोल दिया कि रिक्वायरमेंट डिलीवरी करो, यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने चाह के भी सर, उसके बाद रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट आगे आ करो, उन्होंने बोलेगा अरे अरे सॉरी 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 मैं भूल गया, थोड़ा ये चीज ऐड करना है। एक चीज में दिया होम डिलीवरी, लेकिन अगर कैंडिडेट होम पे नहीं है, ऑफिस पे, तो वहां पर ऐड करो। यहाँ पर दिस रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो फिर सर क्या किया जाता है, दैट रिक्वायरमेंट को छोटू रिक्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कोई भी स्टेज एक पर जनवरी को रिक्वायरमेंट आ गया, यू कैन नॉट टच इट। सर को क्लाइंट, यस, तो रिक्वायरमेंट को छोटू रिक्वायरमेंट बोलते हैं, यानी सर स्मॉल रिक्वायरमेंट, उसको सीआर बोलते हैं। उसके लिए क्लाइंट फिर से पैसा मांगता है, कौन? ऑर्गेनाइजेशन, या हमको पैसा दे दो, हम इसको ऐड कर देंगे। ये सेम प्रोसीजर है। रिक्वायरमेंट होगा सर, कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, डिलीवरी होगा। टाइम पीरियड कम रहेगा, 3 महीने नहीं, 4-5 दिन, लेकिन पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट फॉर चेंज। आप जब पहले पहले एंट्री करोगे, आपको इसमें काम करना पड़ता है। ये छोटा छोटा रिक्वायरमेंट आपको देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. That Yes, sir. Yes, sir. means, यानी यहाँ पर इन्होंने कोई भी स्टेज पे नियम ऐसा है, सर ये रिक्वायरमेंट हो गया डिजाइन, जब डिजाइन चल रहा है रिक्वायरमेंट में टच भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब कोडिंग चल रहा है, डिजाइन पे टच भी नहीं कर सकते। जब टेस्टिंग चलता रहेगा, आप कोड पे टच नहीं कर सकते हो जब तक वो डिफेक्ट नहीं भेजे। सर दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया सर, स्ट्रक्चर मॉडल। लेकिन एजाइल क्या करता है, इन्होंने थोड़ा प्रोसेस को मॉडिफाई किया। सर व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस दे हैव मॉडिफाइड? वो बोलते हैं ठीक है भाई, तुम थोड़ा झुको, थोड़ा हम झुकते हैं। आई मीन
एजाइल ये 3 महीने में डिलीवरी होगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट विल बी डिलीवर्ड हियर? एज्यूम करो कि एग्जांपल ले लो सर, ऐड, आफ्टर दैट एडिट, आफ्टर दैट डिलीट, 3 फंक्शन है। तो 3 फंक्शन को हमने 3 महीने में डिलीवरी करेंगे, ऐड, एडिट, रिमूव, एज्यूम करो। लेकिन कस्टमर बोल रहा है मेरे पास सर यानी ये 3 महीने में आपका डिजाइन होगा, कोडिंग होगा एंड टेस्टिंग भी होगा। तो व्हाट आर द फंक्शंस हियर? सर, ऐड, एडिट एंड रिमूव, दिस इज नथिंग बट द फंक्शंस। बट एजाइल मॉडल उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। सर अगर 3 महीने में एक दिन लेट हुआ तो फिर वो बोलेंगे यू हैव टू गिव अस द पेनल्टी। सर उस हिसाब से एजाइल क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको क्यूमुलेटिव अप्रोच बोलते हैं, यानी दिस इज नथिंग बट 1 मंथ डिलीवरी। सो इसी फेज पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। सर यानी 1 महीने में, यस। तो दिस 1 मंथ में उन्होंने डिलीवरी कर देंगे। किसको डिलीवरी करेंगे? हार्ड। गेटिंग? नेक्स्ट पेज पे सर फिर से उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। इस पेज पे क्या डिलीवरी करेंगे? सर एडिट, यस। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes, sir. So next we are going to deliver here in the remove. सर लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है? why this is very suitable approach, लेकिन उसका ड्रॉबैक्स भी है, यानी दिस इज रिमूव। उन्होंने हर महीने कस्टमर को दे दिए, रिक्वायरमेंट दे देते हैं। कस्टमर बोल रहा है ठीक है, थोड़ा हम झुकते हैं, यानी अगर यहाँ से थोड़ा डिले हो रहा है तो फिर हम उसको मैनेज करेंगे। यानी एज्यूम करो आर्ड में 4 फंक्शनैलिटी है। उन्होंने ऐड कर रहे सर क्या क्या डेटा ऐड कर रहे हैं? कंट्री, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एरिया, लैंडमार्क। एज्यूम करो लैंडमार्क आप डिलीवरी नहीं कर पाए। सर किस पे? आर्ड पे। एंड व्हाट विल द ड्यूरेशन हियर? सर दिस इज जनवरी 30, यस 31। इस दिन जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ। सो इस दिन तुमने डिलीवरी नहीं कर पाया, तो क्लाइंट बोलता है ठीक है कोई मसला नहीं है, आप इसको इस दिन ऐड कर दो। इन माय पॉइंट? गेटिंग? और Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी सर द रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम डिलीवरी करते हैं, ये क्लाइंट थोड़ा झुका, उस तरीका से सर ऑर्गेनाइजेशन भी झुकेगा। यस। वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितना रिक्वायरमेंट दिया उतना ही हम डिलीवरी करते हैं, एक्स्ट्रा चीज को सीआर, एक्स्ट्रा पैसा। क्लाइंट बोलता है चलो लैंडमार्क तुमने अभी तक दिया, आर्डर पे इतना फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन उन्होंने दे देते। कभी कभी रियल वर्ल्ड पे रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, वो बोलते हैं अरे 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 एक काम करो, स्टोर और प्रोविनेंस की जगह रीजन थोड़ा ऐड कर दो। सर ये रिक्वायरमेंट कब आता है? पहले आया था स्टेट प्रोविनेंस, लेकिन ये चीज ऐड कर दिया। तो जब ऐड कर दिया, you have to give it without asking for extra money. Are you getting? Yes. That means, what does it specify? That means requirement is absolutely dynamic by nature. This is the very, important statement you must represent. I mean, sir, this is cumulative by nature. This is cumulative by nature. Cumulative किसको बोलते हैं? Cumulative means, देखो, agile is cumulative by nature. Cumulative. सर cumulate करना, यानी सर फास्ट यहाँ से हो गया सर, उसके बाद फिर से डिलीवरी हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको नेक्स्ट रिलीज पे करेंगे, यानी फरवरी 1 में उसको पहला इंपोर्टेंस देंगे। उसी तरह क्लाइंट अगर कुछ एक्स्ट्रा डाटा दे रहा है, यू हैव टू डिलीवर इट विदाउट हेजिटेटिंग। सो दैट इज योर एजाइल प्रोसेस। दैट मींस दिस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड दिस इज नॉट प्लान ड्रिवन, दिस इज वैल्यू ड्रिवन। प्लान मींस सर दिस इज प्लान ड्रिवन, 1 तारीख को होगा मार्च 31, लेकिन दिस इज वैल्यू ड्रिवन। अरे भाई चलता है ना थोड़ा चल। सो दिस इज योर वैल्यू ड्रिवन approach. So that is your agile. I mean, sir, what do you understand here? In this, requirement is absolute dynamic by nature. यानी requirement constant frequent changes होता रहता है। तो agile का baseline statement क्या होगा? सर requirement is absolute dynamic by nature. लिखो, इतना ही बोल देना, requirement is dynamic
बाय नेचर। परफेक्ट। सो ये हो गया तुम्हारे एजाइल प्रोसेस। सर यहाँ पर जो वर्डिंग होता है, यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ पर वही होता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट टर्मिनोलॉजी अलग रहता है। जैसे कि सर कंपनी में हमने पढ़े कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया आपका बी मॉडल। सर यहाँ पर जिसको पीएम बोलते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, एजाइल पे इसको स्क्रम मास्टर बोलते हैं, स्क्रम मास्टर। इस यहाँ पर जिसको बीए बोलते हो, बिजनेस एनालिस्ट, यहाँ पर इसको क्या बोलते हो सर, प्रोडक्ट ओनर। ये वर्ड खाली यूज करना, प्रोडक्ट ओनर। सर इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ओनर, इसको बोलते हैं सर, इसको रिलीज बोलते हो। अब बोलते हो रिलीज, एक रिलीज इज क्वार्टरली डिलीवर। यहाँ पर इसको स्प्रिंट बोलते हैं, SPRINT। यहाँ पर जिसको SRS बोलते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये देखो यहाँ पर एजाइल पे इसको स्टोरीज बोलते हैं। इतना टर्मिनोलॉजी याद करके रखो। सर यहाँ पर जिसको SRS बोलते हो, एजाइल पे इसको स्टोरीज बोलते हैं, स्टोरीज। This is the only differentiate part. Okay guys, let's start. Sir, this is nothing but your process. तो रिज्यूम पे जब रहेगा, उन्होंने डेवऑप्स तो पूछेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल उन्होंने एजाइल पूछ सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल तक आप जानते हो, आप लोगों के लिए इतना काफी है। नॉट गोइंग टू सर स्क्रम मास्टर इसको बोलते हैं, याद रखो। सर ये कौन है, पीएम है। तो एक मीटिंग होता है हर दिन, यानी सर ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल मॉडल, उसको स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेंगे तुम स्क्रम मीटिंग में इन्वॉल्व हो, बोलने का यस। सर ये मीटिंग में क्या होता है, स्क्रम मास्टर जो है ही इज गोइंग टू बी द चेयरपर्सन। सर चेयर इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पर एवरीबॉडी बोलेगा सर, एवरीबॉडी बेसिकली इन द प्रोजेक्ट प्रेजेंट हियर, डेवलपर, सर टेस्ट इंजीनियर, सर प्रोडक्ट ओनर, दैट इज बी। फायदा क्या है, जो इश्यूज होता है गाइस, एक ही जगह में उन्होंने खड़े होते हैं एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि वो बोलेंगे ओके टेल मी वेयर इज द एग्जैक्ट इशू इज, तुम बोलोगे इट इज द इशू। सर अगर प्रोसेस हिसाब से जाओगे इट विल टेक टाइम। सबको सामने में खड़ा करके वो मीटिंग होता है, हर दिन होता है सर, हर दिन 8 आवर चलता है। इसको स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। ये चीज जान के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बोलेगा सर इट इज नथिंग बट एवरीडे स्टेटस कॉल, everybody belong to the project basically present, and whatever the issue that is going to be resolved on the call itself. This is nothing but your scrum meeting, एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी, ये हो गया आपका प्रोसेस। रिज्यूम पे जब रहेगा यू मस्ट नो सर व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस, बट डेवऑप्स के ऊपर उन्होंने पूछेंगे। और एजाइल पूछा तो पूछा, वो पूछेंगे कि तुम एजाइल पे काम किया, यस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिज्यूम पे जब रहेगा, सर और किसी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, यू मस्ट नो द सिस्टम। सर सिस्टम जब तक तुम नहीं जानोगे, प्रोजेक्ट वेरिएंस नहीं हो सकता है। एटलीस्ट सिस्टम। सर सिस्टम किसको बोलते हैं, व्हेनेवर उसी चीज से सब कुछ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीट आर्किटेक्चर, दिस इज सिस्टम। उसके बाद सर क्या रहता है, मॉड्यूल्स। उसके बाद क्या रहता है, कंपोनेंट। हायरार्की ऑफ द एप्लीकेशन गाइस, इसको अच्छी तरह समझो। सर कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद your some modules. Okay, next you come here, sir attribute, perfect। सर उसके बाद attribute के बाद element, this is nothing but the any system और application उसका hierarchy इस लेवल पे होता है। अब जो भी उस पढ़ रहे हो, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो गाइस, इज अ वेरी प्लेन फंडामेंटल्स। तुम इसको नहीं समझोगे, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट। सर व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर तुम्हारे पूरा ओप्स, आई थिंक एवरीबॉडी कंप्लीटेड ओप्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन इज? यस, क्योंकि आपने पूरा चीज को फंक्शन पढ़े हो, राइट?
हेलो, Yes, sir. आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सर आप कैसे लिखते हो, आपने डेफ यूज करते हो या एफ यूज करते हो। मैं बोलूंगा मैं ये यूज करूंगा, आई एम द लेमन, दिस इज माय फंक्शन। अब बताओ ये वर्ड क्या होता है। आपने बोल रहे हो कि सर डेफ लिखते हैं, ये फंक्शन नहीं है ना, आप ये लिखते हो। आप ये लिखते हो क्योंकि आपको पाइथन बोला गया कि इट इज, यू राइट इट एंड सिस्टम विल अंडरस्टैंड दिस इज अ फंक्शन। माय क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इट इज। सर यानी ये पूरा एवरीथिंग इन द प्रोजेक्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये चीज नहीं समझते हो तो फिर यू आर डूइंग नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। यस गाइस, लेट्स टॉक। आपने इसको नहीं समझ के कैसे लिखा फिर बिगिनिंग? Sir, function is any task that we wish to complete. It is a Task. block of code which perform अच्छा, the given task. We मैं can आपको reuse it wherever we want. के मैं आपको इंग्लिश पूछा ही नहीं, मैं आपको हिंदी में पूछ रहा हूँ। द लेमैन, मैं आपको कल समझाया था, जिस दिन आप लेमैन को समझा दिया, यू आर द ब्रिलियंट कोड डिजाइनर। दैट मीन्स मैं लेमैन हूँ, मुझे पता नहीं है मैं यूजर आईडी एंट्री करूँ पासवर्ड एंट्री करूँ। सर कुछ भी कंडीशन हो सकता है। यस, आपने कोड लिखा विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपर, रेस्पेक्ट टू टेक्निकल पर्सन, वो जो समझते वही लिखा। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विल वर्क with respect to the end user. Who is the end user here? I am the end user. That means I can enter here, sir, user ID, this is UID, and this is password. What is the function of here, guys? Sir, I can enter here, correct, perfect. This is what you understand. But I am the end user. Sir, मैं इसको entry करूँ, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, perfect. In this case, what your get method will respond from the server? That is your coding. This is coding. ये चार data is your coding. और बाकी जो लिख रहे हो वो कोडिंग नहीं है, दैट इज लैंग्वेज। जैसे आपने मराठी सीखा, हिंदी सीखा, जब बचपन में कुछ सीखा ही नहीं था, तो ये लैंग्वेज है, तुमने लैंग्वेज सीखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग गाइस, व्हाट एग्जैक्टली द मैकेनिज्म, दिस इज कोडिंग। ये चार वर्ड विल बी इक्वल, should be guys, by the requirement, I mean client sir, yes, by the test engineer, yes, by the developer, yes. So that is your functions. Let us understand, because पूरा बिजनेस में एक वर्ड पे आपका कंप्लीट कोडिंग विल बी डिजाइन, दैट इज फंक्शन, वी मस्ट नो इट। एज्यूम, ओके गाइस, एज्यूम करो मुझे ओप सीखना है। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर द फंक्शंस, ये चीज है क्या। चलो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। एनालॉगस सिस्टम से समझो तो भी जाके समझ में आता है। अगर आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझोगे शायद समझ में नहीं आएगा, वेरी लेमैन कंसेप्ट में समझना। सिर्फ आप सोच रहे हो कि सर फंक्शन आपका कोडिंग पे, नो गाइस, यू आर डूइंग समथिंग मिस्टेक। फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है, दिस एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सुनो गाइस, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट विद दिस। आई मीन अगर उसका फंक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं करता है। यानी सर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एज्यूम करो सर लैपटॉप, सर माय मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल। वी मस्ट नो व्हाट द फंक्शन ऑफ मोबाइल। इट इज नॉट सैमसंग और एप्पल, it is call, calling, call Jana, call Anna. Sir, I can send message also. Any message send and message receive. Are you getting guys? Hello. Yes, sir. So what is Yes, sir. specify here? So it specify these are the functions guys, and this is why you are being paid.
So that means, sir, if this is the things I know, then I can write any program, guys. Anything. What is the object here? Mobile. What type of mobile it is? 4G or 5G is the data. So this is the mobile. And what is the function here? So call sending. And inside call sending, what will be the data? Sir, shall be the data. Next, sir, mobile call receiving. This is what you are going to use. If you do not know, आपने फिर कोड कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे समझ के चलो. So this is nothing but your functions. चलो guys. Sir, function मतलब assume करो. This is your you. सर बोल रहे हो सबका. चलो एक टक को मैं खड़ा. सर मैं खाता हूँ. I eat. That is the function of human. Like sir, कुत्ता भी खाता है. Yes. So that is it. Sir, मैं सोता हूँ. Sleep is the function here. Sleep. So next. So this is your sleep. Next. Sir, मैं क्या बोलते हैं उसको? और क्या? सर मैं रन करता हूँ. ठीक है, fine. This is function. This is function. इन दोनों में सब सेम है तो क्या अलग क्या है? Yes, you can speak. You cannot speak. That is the functions, guys. Same thing. Assume करो sir, your Amazon. If it is the Amazon, sir, what is the function here? I'm going to derive this the function, sir. This is Amazon. ये application का function क्या है? Yes. What is the function of this application? Sir, online buying. Sir, selling भी कर सकता हूँ. Yes. Online selling. These are the two functions you have to satisfy, and this is the requirement. So whenever requirement comes, guys, you must know the requirement comes with respect to the functions. Assume that programming लिखते you must know the functions of the system. Assume करो this is account. What are the functions here? The function is add, delete, and remove. These are the functions. So if I'm going to add, so this is your functions. You have to understand this is your add. Then if add is the function, then what are the data here? The data must be sir cell number, perfect. Sir country, yes, perfect. These are data. You must know it. This is the complete information about your oops. इसको नहीं समझ के I think you are next. What are the data, sir? Here state. These are the data. So these things must be present in the edit. Yes. Copy paste. It. Yes. And remove. Remove it. This is the way, guys, you have to write. That means the most important point is you need to understand the functions. Sir, function कोई भी चीज पे जब आप ETL पढ़ रहे हो, सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ETL? वो पूछेंगे वही चीज मेन होता है. सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ETL? आपने ETL पढ़ रहे हो. दिस इज सॉर्ट सिस्टम. This is source system and this is your target systems. Then what is the function of ETL? Before you writing any code, you must know the functions of ETL. Are you getting, guys? Hello. What is the function of Yes. ETL? क्या है function इसका? Function क्या है इसका? मतलब ETL में करते क्या हो? Extract from different sources, Oh. transform it as per the requirement and load into the data. डेटा वेयरहाउस में नहीं क्यों करते हो? वो तो आप करते हो, लेकिन क्यों? My question is why? And why is the business? आपने जो बोले वो आप काम करते हो, ठीक है ना? मुझे क्या करना है? मैं पूछूंगा आप क्यों करते हो?
आप बोलोगे सर मैं कल 50 किलोमीटर दौड़ूंगा, ठीक है ना, मुझे क्या करना है? माय क्वेश्चन इज व्हाई। दैट इज द बिजनेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। सर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज नॉट द आंसर। कल ही मैं समझाया था। आप वही बोल रहे हो कि सर मैं कर रहा हूँ क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हो, वही क्यों का जवाब देना है। आप ये बोल रहे हो कि लैम्डा फंक्शन वन लाइन फंक्शन, अरे ठीक है ना, वन लाइन क्यों लिख रहे हो, दैट क्यों इज योर आंसर। इफ सोर्स सिस्टम, दिस इज सोर्स सिस्टम एंड दिस इज सोर्स, सर एक जगह में लोड होना जरूरी क्या है? इफ यू ऑल सिट इन अ सिंगल प्लेस, then I can do, that means gathering of your data, that is collection of data. Why? एक जगह में रहने की क्या मतलब है? Because to do the analysis. Analysis क्यों चाहिए? To get the perfection definition of data, that is 3NF data, third natural form data. क्योंकि सब एक जगह बैठोगे तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। सबको इसीलिए एक रूम पे बैठा जाता है, राइट द एग्जाम। सेम कॉन्सेप्ट गाइस, ऑल द डेटा एक जगह लोड होने का लॉजिक क्या है सर, क्यों करते हैं? Because every data will be loaded and we are going to analysis. Why analysis is important? To take the perfect decision. And the decision is purely to determine your business. Sir, I mean, Everest Telecom, assume the candidate recharge here 250. Second महीने sir 250. Third महीने sir 100 रुपया. Sir fourth महीने 50 rupees. Fifth महीने किया ही नहीं, sixth महीने किया नहीं, फिर से 10 रुपया. This data will be collected by the Airtel. They're going to analyze. Warehouse will provide the information. Sir, किसके लिए? To take the decision. That decision will govern the business. Because this is machine learning. Machine will understand your intention. Sir, machine कौन है? A non-living object. ये word बोलना है. Sir, the major function of ETL is to take the DSS, support the DSS system. Decision support system. Sir, decision means everything purely depends on decision. मैं इधर बैठूं, वहां जाऊं, किधर बैठूं, सर मैं इसको चुनूं, इसको चुनूं, इस कंपनी में जाऊं, वहां कंपनी में जाऊं, कब जाऊं, किस कंपनी का ऑफर लूं, सर प्रोडक्ट कब सेल करूं, कितना परसेंटेज ये दूं, टैक्स कितना दूं, everything purely depends on the decision. So for better decision, a perfect analysis is required. And for perfect analysis, the data is very important. That is the most important point of your ETL. सर उसकी बात वो तो अप्रोच हो गया ना सर, द फंडामेंटल इज राइस, लेमन राइस करो, टमाटो राइस करो, सर उसकी बात तो हो गया डेटा, बिग डेटा, ETL होता क्या सर, सेंट्रलाइज द डेटा। और जो अप्रोच यूज करते हो दैट इज वेरियस अप्रोच। आई मीन इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा, दिस कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड, satisfied, Airtel will declare the candidate who is having prepaid, they can call 200 type message free। ये डिसीजन नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, दिस कैंडिडेट कैन स्किप, दैट इज बिजनेस। Regarding guys, that means what is the function of ETL sir? Function of ETL is nothing but the mapping of source system and target system. Sir, why? Because this is the source system. is a यहाँ load होगा, we are going to target. Sir, how? I mean, the source system defines your name. So what is your name here? Sir, my name is Amit. First name. Sir, this first name. And this is your last name. Getting guys? What the customer is asking here, in the warehouse the data must be loaded with first name dot last name @ amazon.com. That is Amit
dot patil @ amazon.com. This is what the data expect and how you are going to automate it, how you are going to develop this code. सर रियल वर्ल्ड पे 1 मिलियन रहेगा तो हम इसको कैसे करेंगे? Getting my point? Are people getting or not? Yes, sir. Yes, sir. This is a very important scenario and यही चीज आपको बोलना पड़ता है, लाइव सिनेरियो है guys. Are you getting my point or not? Yes, sir. Getting Yes. sir. अब क्या 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 करोगे, क्या बताओ? कोड छोड़ो, मुझे प्लेन लॉजिक बताओ. न्यूमरिक अंडरस्कोर्स वगैरह कुछ सिंबल्स वगैरह देखिए. है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है भाई मेरे. न्यूमरिक देख लोगे, ये कर लोगे, कैसे क्या करोगे? Okay guys, what is the function here? We need to understand here. So function means ETL function आप बोल रहे हो कि this must be the representation. This is the data the client wants. First name, last name will be given. इसका डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे guys, you will get the answer. So f name is equal to 20 length. Sorry, f name, this is fundamental. I mean, if your father's name is Amit Patil and your name is Roshan Patil. Roshan. If you inform me your name is Roshan, I must not ask what is your surname. Are you getting guys? Yes, So sir. what is the logic here, sir? If the customer is asking you first name length is 20 and the email ID would be created first name dot last name @amazon.com must be created. This is what the requirement. Sir, एक line पे दे दिया. Now your data analyst will start. You have to analyze the data. Every data basically guys consists 2 characters. पूरा complete data science exists with 2 parameters. One is the length. Are you getting? Next, the types. I mean, the data type. Perfect. What type of data it is? So whenever you are going to define this one, and again, जब data का length measure किया जाता है, you have to understand ये word बोलना है. So data classification will be in terms of 2 terms. One is static data, and one is dynamic data. ये word बोलना है guys. This is your business. पूरा world इसी पे छुपा है. Sir, data is going to be classified into 2 types, static and dynamic. Sir, what is static data? Static data means which is constant by nature. रो क्या होता है? This is your order ID. So what does it mean? Sir, यहाँ से million order ID will be remain same. Are you getting? Hello? Yes, क्या sir. आप बोल सकते सर मेरा ऑर्डर आईडी रहेगा 5, उसका रहेगा 6? कभी रह ही नहीं सकता है. यस, इस डेटा को स्टैटिक डेटा बोलते हैं. आई मीन सर, transaction ID, yes. Pin code, yes. That you have to judge it. And dynamic data means product name. Perfect. I mean, sir, it can vary it. Yes. What it will vary it? The length. So length of any data is the very important parameter during implementation. Data analyst का बहुत important point है length derive. So length is classified. Sir, length word आया कहाँ से? Line से. Line means the origination. ये origination है and another one is destination. So this point is known as mean value
and this is your max value. That means if the data is dynamic, sir, I mean customer name, yes, you have to find out what is the min value of customer name and what is the max value. That will be different. But sir, in static data, absolutely the mean is equal to max. Getting my point? Hello. Mean Yes, sir. is Yes, sir. so these are the two very important parameter you have to judge. क्योंकि इसी से सब पूरा आपका गेम स्टार्ट हो. सर, व्हाट इज द फंक्शन हियर? फंक्शन इज ऑफ एटीएल इज काउंट. आपने तो पढ़े होंगे. सर काउंट किसको करना है? काउंट यू हैव टू काउंट फर्स्ट नेम. कस्टमर इज आस्किंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम. सर हो सकता है माय नेम इज वालगुरुसम. दैट मींस I don't have surname? Yes. In that case, do you think email ID will be created? Absolutely not. So this data will be known as corrupt data. Your task is to remove it and identify it. Are you getting? Yes, sir. सर कैसे? तो पाइथन पे उतना स्मार्टली गाइस को डिजाइन करना पड़ता है. इसीलिए पूछते हैं तुमने टेस्टिंग किया क्या? You don't require your code. अगर आपने टेस्टिंग किया, you can be a best पाइथन डेटा साइंटिस्ट. ये टेक्नोलॉजी का गाइस ये है एडवांटेज. पाइथन इज प्रोग्रामिंग गाइस, लेकिन डेटा साइंस इज टेस्टिंग स्ट्रांग होल्ड. इसीलिए गाइस ये चीज थोड़ा फोकस करो. सर थोड़ा सर मैकेनिज्म क्या होता है? यू कैन राइट. देखो सर सिंपल चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तभी लगेगा जब हम इनको समझ नहीं पाते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शंस आर. वी हैव टू डिराइव द फर्स्ट नेम dot last name is equal to met. So what is the function here? Function is this the count. If the count is 10, assume karo. So last name must be 10. Yes, it must be. Are you getting or not? Sir, if it is 10, what will the count of here? Hello, 10. तो आपको तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है. फर्स्ट नेम वेरिएबल a, लास्ट नेम वेरिएबल b एंड थर्ड वेरिएबल is c. सर इसको कैसे लिखना है? अगर फर्स्ट नेम काउंट चेक करो पहले. सर a वेरिएबल जो भी है is equal to b. ये समान हो रहा है. यस, फर्स्ट कंडीशन. देन ये दोनों जो भी आया that must be c. Then the ETL function works here. That is count function. Function 1 is complete. Next, सर इस तरीका से डेटा लेगा, ये डेटा लेगा, इसको पूरा कंप्लीट करके करेगा. लेकिन सर इसको कैसे मेजर करेंगे कौन सा सही है कि गलत है? यस, you have to analyze the data. What is the first name specify here? The length is equal to 20. So obviously last name would be 20. Perfect. So what would be the length here? Total 40. But what is the format here? 20 is the maximum length dot last name is equal to 20. The last name at the rate amazon.com is the static data. So what is the count here, sir? 20 plus 1 plus 20 at the rate amazon.com is static. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 11. So plus 11. So what is the total count here? Sir, 52. 52 is the maximum length of email ID. सर ये कहाँ से आ गया, कहाँ से? इसी चीज के लिए यू आर बीइंग पेड गाइस. इसको डेटा एनालिस्ट बोलते हैं. You have to analyze the information. What exactly? That means sir, in the warehouse or big data, the complete email अगर 52 से एक भी जाएगा ज्यादा, that data is a corrupt data. You have to write in the code. अगर email का length आपने variable लिया L, it must be less than equal to 52. This is code.
आर यू गेटिंग गाइस? सर वो क्या करेगा, वो यहाँ से पूरा गाइस पूरा मिलियन डेटा को चेक कर लेता है। इसको कोड करेंगे, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इट लाइवली सर कैसे काम करता है। आफ्टर दैट sir, this is a dynamic data because email. So what will the min length here? That's fine. This is maximum length is 52. So what is the min length here? Customer will not tell you guys. Neither your Google will tell. This is analytics. So these things you are going to implement. A, my name is A. Dot, my name is B. Sir, surname is B. At the rate Amazon.com is static. So what will be the minimum length of here? This 11 plus 12, 13, 14. So 14 is the minimum length. Are you getting guys? Hello? Yes, sir. This is your Yes. intelligence sir. ये दोनों फिगर आ गया, 5 मिनट में कोड लिखोगे, 5 मिनट. Next function comes. Sir, how we are going to do it? Simple. You are going to map first name dot last name dot at the rate amazon.com. This is known as X is the first name plus last name is the dot plus Y is the last name. Which function you are going to use here? Yes. Yes. फर्स्ट लेटर लिख दिया. हेलो. अरे which function you are going to use? Length. हाँ? अरे मैपिंग कैसे होता है? हेलो, आपने मैपिंग कैसे होता है? परफेक्ट, वही चीज मेरे को चाहिए था. लैम्बडा फंक्शन यू आर गोइंग टू यूज हियर. अभी समझ में आ रहा है? सर दिस लैम्बडा फंक्शन एक्स को हम देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मैपिंग कर लेगा. यस. अभी फर्स्ट नेम को कैसे लेगा? पूरा डेटा को वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, फाइल हैंडलिंग में डेटा को पुल कर. समझ में आ रहा है? Yes, फाइल sir. हैंडलिंग पढ़े हो ना? Yes, sir. फाइल पे क्या करेगा, यहाँ से वेरिएबल उठाएगा, सब डाटा को एक एक करके लेगा. सर इसको लेगा, फिर से ये दोनों को जोड़ेगा, जोड़ के ईमेल आईडी क्रिएट कर देगा. ईमेल आईडी जब क्रिएट हो, आप चेक करोगे कि भाई मेरे ये बराबर है क्या. देन यू आर गोइंग टू यूज द काउंट फंक्शन. दैट काउंट फंक्शन विल डिराइव कि फर्स्ट नेम 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है, चलो बराबर पास. नेक्स्ट ये भी 20 आ रहा है, पास. ये कोड पे लिखना है. दैट इज व्हाई यू आर बीइंग पेड. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो इस चीज को करेंगे प्रैक्टिकल वाइज. वो आपको पूछेंगे सर ये डाटा कहाँ से आता है? वेयर हाउस से, नहीं तो बिग डेटा से. सर किस फॉर्मेट पे? जेसन और सीएसवी. हमने पूरा कंप्लीट चीज को ऑटोमाइज किया. वी ऑटोमाइज व्हाट? ETL फंक्शंस. इसी चीज को बिजनेस में भूलना होता है. सर वी ऑटोमाइज बेसिकली ETL or warehouse functions. Basically we generate, we receive the data from the warehouse and sir in terms of JSON or CSV format, and we analyze the data and we write the code. तो क्या क्या फंक्शन यूज होगा, किस तरीका से करोगे, और लाइवली कर लेंगे. यू विल गेट द क्लियर पिक्चर. ओके गाइस, तो दैट मींस सर एवरीवेयर you require one word, that is functions. अब सर functions को समझने के लिए सर you must know what exactly the how the system works. Every system consists these are the data. सर जैसे कि your Samsung is the system. सर Samsung में Android है, सर Symbian है, 4G 5G the module. Again 4G में सर M1 M2 is the component. Again M1 से सब मॉड्यूल क्या होगा सर? सर फ्लिप
and plain. लेकिन attribute क्या रहेगा? These are nothing but guys the structure of any system. तुम इसको समझोगे तभी जाके सर डिक्लेयर कर सकते हो क्लास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा. तुम इस चीज को समझने से पहले सर सिस्टम आप किस चीज को बोलते हो? ओके गाइस, फर्स्ट यू नोट टू अंडरस्टैंड सर सिस्टम क्या होता है. सिस्टम यही होता है कि ये आप हो, दिस इज यू. हमारे सिस्टम पे कितना मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड रहता है? सर दैट इज नथिंग बट यू एंड दिस इज योर. तुम अकेले प्रोग्राम नहीं लिख रहे हो गाइस, समवेयर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कोई भी चीज तुम अकेले नहीं करते हो सर, ये चीज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, जिसको लॉज ऑफ पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं. कोई भी चीज अकेले नहीं होता है. वो इस चीज को एनालिसिस करो. सर ये अगर चीज को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये ETL क्या हम अकेले कर रहे हैं क्या? इट इज प्रेजेंट समवेयर इन द यूनिवर्स. दैट इज व्हाई इट कम्स. दिस इज योर फ्लावर वन. सर इसका कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसका स्वीट्स कितना है, शुगर 10%. सर दिस इज फ्लावर टू एंड दिस इज फ्लावर टू. सर इसका शुगर कंटेंट कितना है, 20%. This is what the data is. This data, whenever it is going to be staged, sir, who designed it? Honeybee. We don't know. This is known as staging area. I mean, business logic will be implemented here. What is the final product here? Warehouse means always it is refined product, guys. That is your money. शायद इससे ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ट वर्ल्ड पे हो ही नहीं सकता है ETL के लिए. Is extraction of data and implementing the business logic and the refined product comes. Even इंसान आज तक समझ नहीं पाए ये क्या है, इसलिए चोरी कर लेता है. ओके गाइस, दैट मीन्स सर ये फंक्शन को समझने से पहले हम नॉर्मल चीज को समझेंगे. पहले फंक्शन आप ये बोल रहे हो, ये सिस्टम है, ये आपका हेड है. सर व्हाट आर द फंक्शंस हियर? यू आर गोइंग टू, योर हाथ है सर, पैर भी है. यस, ओके. सो दीज आर द योर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स. व्हेन आई इंटीग्रेट एवरीथिंग, then the function will come. What is the function? You can speak. Sir, these are the functions. Yes. I can eat. Yes. That means, sir, every function will be derived when it is going to be a system, complete system. So without system, you cannot derive the function. सर मैं इसको अलग कर दिया तो क्या घंटा बोलूंगा मैं? बोल ही नहीं सकता. यानी सर the function of any system will work when it is going to be integrated. Yes, that integration will be takes place with respect to this is the hierarchy. It is some kind of modules, components, submodules, attribute, element. जैसे कि this is the head is the module component. so head के अंदर दो आई है. yes, इसको समझोगे तो Amazon सिस्टम समझ जाओगे गाइस. तुम you can define something, you can explain something. so this is nothing but I2. yes, and that means sir these are the components, the module, submodule. I के अंदर सर I lead है. yes, that is attribute. sir retina, there is element, नहीं attribute, element. so these are the structure. that means sir this is your system. and sir another system, assume करो you are going to ask someone, this is another system. so that system means sir what we understand is a complete architecture. yes, complete application. yes, जैसे कि Amazon अकेले नहीं है. you are paying something, that is payment architecture. that means this is another system. ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हुआ आपने उसको क्या बोलते हो? Django REST API. The plain fundamentals are two different systems will communicate. So this is nothing but one request you send and the another system will send the response. Assume, sir, this system, assume karo guys, sir, it is you. You ask the question. What is the question? What's your name? What's your name? So what's your name is the question and it is asked
in English. And this system will receive the data. Sir, you want to verify in this system, I have to verify. Sir, मेरे को physical जाना पड़ेगा? Absolutely not. This can be with Infosys. This can be with TCS. This can be with Capgemini. And you are here in IBM. Then what exactly the scenario you are going to implement? The data intelligence. I mean, the question is, what's your name? You put a question here. So what is your expectation here? So this system कान पहले सुनेगा. Sir, यानी ear? Yes. Ear will receive the data. This is ear. So ear will send to your, किसको बोलते हैं? Sir, दिमाग? Yes. The data will go to brain. So what is the question neural networks works here? The system will try to analyze what the exactly question is. And this is the brain. Sir, is another modules? Yes. And this brain will send the signal to the mouth. Please speak. वो पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है? So this mouth will immediately respond your question. That means, sir, मैं जो data दिया, data is responsible to test all this system. That means यहाँ 3 function test आपने कर लिया, verify कर लिया. Sir, mouth answer दे देगा? Yes. कि my name is Amit. So what is a response? So this is your method. You have implemented get method. What the data you have to provide? The question. And the language must be in English. This is the data. And method you have used, get method. And response, what you expect? Customer name. Are you getting, guys? So whenever these things happen, you must understand what are the systems basically works to derive this function. This is the function. What is the function here? The speak. You must understand the code. So for what reason I am putting this data? I have to do the code for speaks function. Sir, if this function works, I mean it is working fine. I mean this data is coming okay. Then what you have verified here? The objective is to, sir, I have to test. Head is working fine. Yes, perfect. Sir, ear is working fine. Perfect. Sir, mouth is also working fine. Perfect. Assume in this you have put the data, sir. Is this answer you didn't get? What does it mean? Sir, it can be, this can be wrong. Yes, सुन नहीं पा रहा है. सर हो सकता है समझ नहीं पा रहा, एड़ा है. सर हो सकता है ये दोनों काम कर रहा है, मुंह काम नहीं कर रहा है. That is your task. But this will work when you understand the function, and this function basically will be derived by using these 3 sub element. तुम इसके नहीं समझ के तो फिर इसी के ऊपर फोकस करो. मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आ क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसको चेक करो. So what it specifies, sir? We must understand what is the system architecture. Then only we must understand function. If we understand function, उसके बाद तुम लो लेवल में ये कर सकते हो, कुछ है ही नहीं. Again, it is also not perfect. I want to change the question. Same question, I will use it as French. This is your unit testing, guys. जो पूछते हैं तुमने unit test किया क्या? So that means same question, language, that is data. The data intelligence will derive your system perfection. So French I change कर दिया, तो यहाँ क्या होना चाहिए? आना ही नहीं चाहिए सर. अगर आ रहा है, सर ये बंदा कभी फ्रांस गया ही नहीं, ये कैसे सीखा कि कुछ तो गलत है. That is your data intelligence. You are going to change the data, guys. Variation. That will derive the functions, guys. I mean functionalities. This is very important scenario. तो उसी हिसाब से, guys, you can move on. Anything. Let us come. Then how come the system basically works? Let's assume Amazon is the live scenario. How does it work? एक ही एप्लीकेशन तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं काम करता है. वो अंदर पे कैसे काम करता है, that is your project functions.